Hello friends, this is Nutan. Welcome to our Mavericks channel. तो लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप, उसकी डेफिनेशन, उसके थ्योरम्स, एग्जांपल्स क्लियर किया है लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लास्ट पॉइंट है ग्रुप चैप्टर में से लास्ट पॉइंट, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, इसके थ्योरम आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, तो उसमें जो थ्योरम है वो देखते हैं पहले। फर्स्ट थ्योरम है, तो इसमें टोटल 7 थ्योरम्स है। 7 थ्योरम्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, देखो, इफ जी स्टार इज अ ग्रुप देन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन जी इज यूनिक। सेकेंड पॉइंट है, every A belongs to G has unique inverse in G. And third is the for every A belongs to G, A inverse of inverse is A. And for every AB belongs to G, A star B of inverse is equals to B inverse star A inverse reversal law. तो थ्योरम में ये 4 पॉइंट्स हैं। तो थ्योरम का प्रूफ हम देखते हैं। तो जो थ्योरम है उस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, G कॉमन स्टार इज अ ग्रुप। देन फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी इज यूनिक, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स, तो सपोज E and E dash be two identity elements in G, group G. Then E star E dash is equals to E, since E is a identity elements. Also, E star E dash, which is equals to E dash, since E dash is also identity elements, and therefore E is equals to E dash. And thus, in a group G, there is only one identity element. तो यहाँ पे E और E डैश उनने सपोज 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स कंसिडर किया है। तो E स्टार E डैश E स्टार E डैश is E dash, because E and E dash is identity elements, and therefore E and E dash are equals, therefore there is only one identity elements. तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ किया है। तो सेकेंड पार्ट क्या है थ्योरम में, तो सेकेंड पार्ट देखो क्या है, every A belongs to G has unique inverse in G, existence of inverse. Suppose A belongs to G has 2 inverse, हमें 1 inverse, यूनिक इनवर्स के लिए प्रूफ करना है। तो हमने फर्स्ट कंसिडर किया इट हैज सपोज 2 inverse B and C, then A star B, which is equals to B star A, which is equals to E. Again, A star C, C star A, which is also equals to E, because unique inverse. It has 2 inverse. Then suppose B is equals to B star E. E की वैल्यू 1 है, because it is identity inverse. Then again B star, suppose E star के लिए वैल्यू है हमारे पास A स्टार B, B स्टार A, E स्टार C, C स्टार E। तो सपोज E की जगह पे हमने A स्टार C डाला,
और बी स्टार ए स्टार सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो बी स्टार ए के लिए भी ऑल्सो ए की वैल्यू है अगेन सी, then b is equals to c, and therefore a belongs to g has unique inverse in g, बिकॉज यहाँ पे बी और सी दोनों भी इक्वल है। नेक्स्ट थर्ड प्रूफ करेंगे हम। थर्ड क्या है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, यानी प्रूफ करेंगे हम। तो देखो ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। तो सपोज इफ ए इनवर्स इज inverse of A in G, and therefore A into A inverse, which is equals to A inverse star A, which is equals to E. Again, A inverse star A or A star A inverse is also equals to E. And both are equals. A is inverse of A inverse. And therefore, A inverse of inverse, which is equals to E. लास्ट प्रूफ है हमारा। फोर्थ पॉइंट है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, A inverse of A star B inverse is equals to B inverse A inverse reversal law. So A star B and star B inverse star A inverse, which is equals to A star B star B inverse star A inverse. तो यहाँ पे देखो A star E, which is equals to A inverse, ये इनवर्स प्रॉपर्टी का थ्योरम यूज किया है, and which is also equals to A star A inverse, which is equals to E. Again, also B star B inverse star A inverse, and यहाँ पे A star B किया, B inverse star A inverse star A star B. Here also same, B inverse star E star B, which is equals to B inverse B, and which is also equals to E. तो दोनों भी इक्वल आएंगे, एंड दस A star B star B star A inverse, which is equals to B inverse star A inverse, and also star A star B, which is equals to E. And therefore, B inverse star A inverse is inverse of A star B, and therefore A star B inverse is equals to B inverse star A. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है हमने फोर्थ थ्योरम में। तो यहाँ पे ए स्टार बी स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए स्टार, तो ये जो है बी और बी, इसको एक ब्रैकेट में डाला है। तो यहाँ पे बी स्टार बी इनवर्स की वैल्यू ई पुट किया है यहाँ पे बी स्टार ए इनवर्स, विच इज इक्वल्स टू ए स्टार ए इनवर्स एंड विच इज इक्वल्स टू ई। सेम यहाँ पे ए इनवर्स ए के लिए किया है, और A star B inverse star A star, which is equals to B inverse star A inverse, और दोनों की वैल्यू E है, इसलिए B और ये इक्वेशन इक्वल है, यानी कि B inverse and A inverse is the inverse of A और B, and therefore A star B bracket inverse is equals to B inverse star inverse. ये हुआ हमारा फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 2। कैंसलेशन लॉ है, इस थ्योरम को बोलते हैं
cancellation law. If A, B, C are elements in group G, then first A star B is equals to A star C, which is equals to B equals to C. Left cancellation law. And second one is the B star A, which is equals to C star A, which is equals to B is equals to C. It is a right cancellation law. इसका हमें प्रूव करना है. तो ये थ्योरम को कैंसलेशन लॉ बोलते हैं. एक लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और दूसरा है राइट कैंसलेशन लॉ. तो इसके प्रूफ के लिए देखो, सिंस A which is belongs to G, then we have A inverse is also belongs to G. Then A star A inverse, which is equals to A inverse star A, which is equals to E. अगेन यहाँ पे देखो प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे हम. प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A inverse of A star B, which is equals to A star C. इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स से. तो A इनवर्स स्टार A स्टार B, which is equals to A inverse star A star C. तो यहाँ पे देखो, ये हम एक ब्रैकेट में डालेंगे A इनवर्स स्टार A स्टार B. अगेन यहाँ पे भी A इनवर्स स्टार A स्टार C. तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है E है. तो E और कैंसिल हो जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू C आएगा. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ. सेकेंड जो है उसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे. पोस्ट मल्टीप्लाइंग B star A, which is equals to C star A by A inverse. Then our equation will be B star A inverse is equals to C star A inverse. Again, we have to do this in one bracket, A and A inverse की टर्म. तो इसकी वैल्यू E डालेंगे, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू E डालेंगे, यानी कि B इज इक्वल्स टू C. तो ये हुआ हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ. तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर थर्ड. linear equation in a group. If G is a group and AB belongs to G, then the equation A star B, which is equals to B, and Y star A, which is equals to B, having unique solution. X, which is equals to A inverse star B, and Y is equals to B star A inverse, respectively. This का प्रूफ देखो. तो यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम का मीनिंग देखते हैं क्या है. So first, G is a group, AB belongs to G, then the equation A star B equal to B and Y star A equal to B, having unique solution because दोनों की वैल्यू A है. और यहाँ पे X is equals to A inverse B and Y is equals to B star A inverse respectively. तो फर्स्ट जो है A star X, which is equals to B, we have A star X
विच इज इक्वल्स टू ए स्टार एक्स की वैल्यू डालेंगे हम ए इनवर्स स्टार बी. ओके, देन ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी which is equals to E star B which is equals to B. So A star B, A inverse star B satisfy our equation, hence is a solution. And clearly A inverse star B which is belongs to G. Now if C and D are two solutions for A star X which is equals to B in G, then we have A star C which is equals to B and A star D which is equals to also B, and so that A star C which is equals to A star D because दोनों की वैल्यू B है. And by cancellation law C is equals to D and therefore A star X is equals to B has unique solution in G, namely A inverse star B. यहाँ पे देखो क्या किया था, हम इक्वेशन दिया है ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी, देन ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने डाली है, एक्स की वैल्यू दी है ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू ई होती है और की वैल्यू 1 है, यानी ए इनवर्स ए स्टार बी satisfied our equations, then it's also belongs to G. And if C and D are two solutions for A star X is equals to B in G, then A star C is equals to B and A star D is equals to B. तो दोनों का वैल्यू B है, इसलिए हमने लेफ्ट A star X is equals to A star D लिखा है. यहाँ पे कैंसलेशन बाय कैंसलेशन लॉ C is equals to D लिखा है और यहाँ पे A star X is equals to B has a unique solution in G, namely A star A inverse star B. Then similarly Y star A is equals to B has unique solution B star A inverse. ये भी ऊपर का जो जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे ही ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. Theorem number 4. In a group G, if AB square which is equals to A square B square for every AB belongs to G is abelian. Okay, solution लिखते हैं. Let G be a group and AB belongs to G, then our equation AB square which is equals to A square B square. तो इसको हमें अबेलियन प्रूफ करना है. अबेलियन के लिए फर्स्ट हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ होती है कि नहीं वो देखना है. अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुई तो वो G इज अबेलियन ग्रुप. यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर है तो ए बी लिखेंगे और यहाँ पे ए बी लिखेंगे. तो इसमें हम ये ए और ये बी और ये बी बाई
कैंसलेशन लॉ से कट करेंगे. Then our equation will be BA, which is equals to AB, and BA equals to AB, that is our commutative property. And hence G is a abelian group. तो ये है हमारा थ्योरम नंबर 4. नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 5. Let G be a group such that A square is equals to E for every A belongs to G. Then G is abelian. इसको हमें abelian ग्रुप को हमें प्रूव करना है. So let G be a group such that A square is equals to E for every A belongs to G. Let AB, which is belongs to G, then A square, which is equals to E, and also B square, which is equals to D. तो यहाँ पे देखो AB square, which is equals to E, AB square, which is equals to E dot E, ये भी हम लिख सकते हैं because E आइडेंटिटी एलिमेंट्स है. नेक्स्ट AB square, which is equals to E के लिए वैल्यू है A square और B के लिए वैल्यू है A square. यहाँ पे देखो AB और यहाँ पे सेम ऊपर का जो एग्जांपल है कैंसलेशन लॉ. तो ये ए और राइट कैंसलेशन यहाँ से कैंसिल करेंगे. Then our equation will be B equals to AB, commutative. And therefore G is abelian. The next theorem, theorem number 6. Let G be a group and AB belongs to G such that A and B commute. Show that first AB inverse A B inverse, second A inverse B, third A inverse B inverse. तो ये कमिट है कि नहीं वो हमें चेक करना है, यानी कि कम्यूटेटिव के लिए चेक करना है हमें. तो यहाँ पे प्रूफ देखो फर्स्ट ए और बी इनवर्स के लिए लिखना है हमें. इसलिए प्रूफ सिंपल, बहुत सिंपल है. लेट ए बी बिलोंग्स टू जी such that A and B is commute. That means AB, which is equals to BE. तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है A और B इनवर्स के लिए. तो B is belongs to G है, तो B inverse is also belongs to G. Then pre-multiplying and 4 must
pre-multiplying and post-multiplying by B inverse. Pre-multiplying and post-multiplying by B inverse. तो हमारा इक्वेशन क्या है, ए बी विच इज इक्वल्स टू बी ए. तो प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग करना है. तो बी इनवर्स यहाँ पे बी इनवर्स और यहाँ पे भी बी इनवर्स. तो यहाँ पे देखो ये बी इनवर्स ए बी इनवर्स विच इज इक्वल्स टू बी इनवर्स बी ए एंड बी इनवर्स. तो एक ब्रैकेट में हमने लिखा है. तो बी इनवर्स यहाँ पे ए बी इनवर्स, ये हम एक ब्रैकेट में लाते हैं. यहाँ पे भी बी इनवर्स बी ए एंड बी इनवर्स. तो यहाँ पे बी इनवर्स इंटू ए और इसकी वैल्यू है ई. हियर आल्सो ई ए बी इनवर्स. तो इसमें बी इनवर्स ए विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ई कैंसिल हो जाएगा बाय कैंसलेशन लॉ से, और यहाँ पे बी इनवर्स ए और ए इनवर्स बी रहेगा. दैट मीन्स ए एंड बी इनवर्स आर कम्यूट. सेम सेकंड के लिए प्रूफ करेंगे ए इनवर्स एंड बी के लिए. तो हमारा इक्वेशन है ए बी विच इज इक्वल्स टू बी ए. तो इससे हम प्री मल्टीप्लाइंग प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स. तो यहाँ पे ए इनवर्स ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी ए इनवर्स. तो ये हम ए इनवर्स ए बी ब्रैकेट में रखेंगे. यहाँ पे ए इनवर्स बी ए इनवर्स. तो इसमें ए और इनवर्स की वैल्यू ई आ जाएगी. इसमें तो बी ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. दैट मीन्स A inverse and B is commutative. That means commute. Third one is we have to prove what A inverse and B inverse. So same equation AB which is equals to BA. तो AB के लिए इनवर्स करेंगे हम, सेम BA के लिए इनवर्स करेंगे. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है ए बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा, और इसके लिए ए इनवर्स बी इनवर्स. तो दोनों कम्यूटेटिव, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स इज कम्यूट. लास्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 7. थ्योरम नंबर 7 क्या है, प्रूव दैट if G is an abelian group, then AB raised to n which is equals to A raised to n B raised to n for every AB belongs to G. इसका प्रूफ देखो. Let
G B M abelian group A V belongs to G. तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है ए बी रेस टू एन विच इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन बी रेस टू एन। तो ये हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। ये इज मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट ईयर को हुआ है मैथमेटिक्स में। स्टेप फर्स्ट फॉर एन इज इक्वल्स टू when we have ab raised to 1 which is equals to ab and which is equals to a raised to 1 b raised to 1. That means it is true for n is equals to 1. Then next step to assume it is true for assume it is true for assume it is true for n is equals to n. N which is equals to n. So our equation ab raised to n which is equals to a raised to n b raised to n. Then next consider ab raised to m plus 1. So ab raised to m into ab. So a raised to m b raised to n into ab आ जाएगा। तो यहाँ पे a raised to m b raised to n into a इसको b। तो a raised to m यहाँ पे हमें a b raised to n एक ब्रैकेट में डालेंगे और ये b n लिखेंगे। तो नेक्स्ट a raised to n और a का मतलब है a raised to n plus 1 b raised to n और ये b। Here a raised to m plus 1 b raised to m और b। Here also a raised to n plus 1 and b के लिए है b raised to n plus 1 यानी कि m plus 1 के लिए भी ये ट्रू है। Therefore it is
ट्रू, इट इज ट्रू फॉर m plus 1. Therefore, ab raised to n, which is equals to a raised to n, b raised to n, for every n belongs to n belongs to n, and ab belongs to g. तो ये हुआ हमारा प्रूफ। तो आज इस वीडियो में हमने ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टी और उसके ऊपर के जो थे 7 थ्योरम्स है वो हमने देखे हैं। थ्योरम्स बहुत इजी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल 7 थ्योरम्स थे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ। थैंक यू।